Good morning and Jai Hind friends. Welcome to Exam Buddy. Today we will continue with our 700 Advanced Vocab Revision series which I have purchased from the Hindu Editorial. ये सीरीज आपके लिए एक स्कोर बूस्टर का काम करेगी बट प्लीज मेक श्योर यू आर वॉचिंग टिल एंड. Let's continue our today's session. The first word is beget. Beget means to cause or bring about something, means जन्म देना, उत्पन्न करना. So synonym is beget means father, sire, create, generate and cause. Antonym is destroy, prevent and inhibit. His action would beget a series of consequences. उसकी हरकतें परिणाम की एक श्रृंखला उत्पन्न करेगी. Another word is slip into. Slip into means to move or enter something smoothly or unnoticed, often in a subtle or casual manner. आपको क्या करना है, आप मूव इन करते हो, एंटर करते हो किसी अजीब जगह से बहुत आराम से, जहां जब कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है और काफी कैजुअल मैनर में. तो उसे बोलते हैं घुसपैठ करना, एक तरीके से घुस जाना. So next words, slip into का यहाँ पे synonyms शायद रह गया है. Slip into means आपको क्या करना है, enter somewhere or penetrate you can say, and antonym is you can आप क्या कर रहे हो, आपको obstruct किया जा रहा है, एंट्री आपकी ऑथराइज की अनऑथराइज किया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड monger. Monger means a person who promotes or deals in a particular commodity or activity, often with a negative connotation, implying excessive or unwelcome promotion. So monger means एक तरीके का वो आदमी जो किसी चीज में डील करता है और उसे प्रमोट करता है, उसे बोलते हैं व्यापारी एक तरीके से. So synonym is dealer, trader and seller. Antonym is consumer or buyer. He was known as a warmonger, always stirring up conflict for personal gain. Strangulate. Strangulate means to kill or injure someone by squeezing the throat, preventing the flow of air and blockade blood to choke or smoother. So strangulate means gala घोटना. So strangulate means choke, throttle and suffocate. Antonym is revive, resuscitate and breathe. The attackers tried to strangulate his victim, but he managed to escape. The next word is flounder. The flounder means to struggle or move in an unsteady or clumsy manner, often used to describe someone who is confused or in difficulty. एक तरीके से जो लड़खड़ा के चल रहा है, या तो टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन मेकिंग प्रोग्रेस और सक्सेस, या कोई ऐसा जो आगे बढ़ने में या सक्सेस होने में जिससे डिफिकल्टी आ रही है. सो फ्लाउंडर मीन्स स्ट्रगल, स्टम्बल, falter and bumble. Antonym is succeed, thrive and prosper. The student floundered during the exam because he hadn't prepared well. Gambit means a strategic move or action, often with some risk, that is intended to gain an advantage, especially in chess or politics. A maneuver or tactics used to achieve a particular goal, often at the start of a negotiation or process. So gambit means strategy, tactics, maneuver or ploy. Antonym is plumber, misstep and failure.
The politician's gambit to gain more support from public seems risky but ultimately successful. Another word is stature. Stature means the importance or reputation of a person or thing. So, stature means reputation, prestige, standing, rank. Antonym is insignificance, obscurity, and lowness. Her stature in the company grew after she completed the successful project. स्ट्रक्चर कद प्रतिष्ठा मान सम्मान होदा ये सब बढ़ना इनसिग्निफिकेंस मीन्स इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है आपको इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा है लो नॉइस मतलब तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं दी जा रही अनदर वर्ड इज आयरनिकली इन अ वे दैट इज contrary to what is expected or intended, often with the sense of sarcasm or humor. व्यंग कसना एक तरीके से. So, ironically means sarcastically, humorously, and paradoxically. Antonym is straightforwardly and sincerely. Ironically, the man who always criticized others for being late was the one who arrived last. व्यंग रूप है मतलब एक तरीके से मतलब कहने लायक है कि वह आदमी जो दूसरों को बोलता है भाई आप टाइम से आओ दूसरों की आलोचना करता है और वही आखिर में आता है. Next word is rival. Rival means competitor or opponent. Synonym is competitor, adversary, competitor, adversary, opponent, and contender. Antonym is ally, partner, and friend. The two athletes have been arrived for the years, always competing for the top spot. Seeded. Seeded means ranked or positioned in a competition. So seeded means ranked, positioned, or listed. Antonym is unranked or unseeded. She was the number one seeded player in the tournament. Next word is inevitability. Inevitability means the quality of being certain to happen and unable to be avoided. एक तरीके से वो स्थिति कि ये चीज़ होगी बिना इसके नहीं चलेगा. द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन टू हैपन कि ये चीज़ होगा ही एंड अनेबल टू बी अवॉइडेड इसे हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे इसके बिना नहीं चलेगा. सो इनएविटेबिलिटी मीन्स सर्टेनिटी अनअवॉइडेबिलिटी inevitableness and predictability. Antonym is uncertainty and avoidability and improbability. The inevitability of change made the employees prepare for the new policies. Faltering. Faltering means losing strength or momentum. मतलब एक तरीके से लड़खड़ाता हुआ. So faltering means wavering, stumbling, hesitant and weak. Antonym is steady, firm, strong and resolute. His faltering steps showed that he was too exhausted to continue. Next word is spurtering. Spurtering means making irregular, inconsistent progress. Antonym is synonyms is stuttering, faltering, hesitating और stumbling. ऑलरेडी इससे पहले आया था. faltering सेम उसी का synonym है sputtering. So antonym is steady, smooth, consistent and fluent. The engine was sputtering as the car struggled to start. Precarious means next word is precarious in a way that is not sure, secure or stable. So precarious means unsteadily, dangerously, insecurely and vulnerably. Antonym is securely, stably and firmly. The ladder was leaning precisely against the wall. Stimulus means something that encourages activity or growth. So stimulus means encouragement, impetus and motivation and inducement. Antonym is deterrent, hindrance, obstacle.
The government's tax cuts serve as the stimulus for the economy. Next word is tumultuous. Tumultuous means full of confusion or disorder. So tumultuous means chaotic, turbulent, uproarious, or disruptive. Antonym is calm, peaceful, orderly, and serene. The tumul- tumultuous crowd cheered as the team scored the winning goal. Sputter, to make a series of soft explosive sound or to speak in a confused or rapid way. So the sputter means stammer, stutter, splutter, and falter. Antonym is speak clearly, articulate, and pronounce. He began to sputter in surprise when he heard the news. Abstention. Abstention means act of deliberately choosing not to participate in something. तो आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि दिस पॉपुलर athlete has abstained from participate in national games. International player sometimes he avoids participating in national events और छोटे कंपटीशन को अवॉइड करते हैं कई बार तो ये वर्ड आपने काफ़ी कॉमन है सुना होगा सो एब्सटेंशन मीन्स नॉन पार्टिसिपेशन रिफ्रेनिंग avoidance and disengagement. Antonym is participation, engagement, and involvement. His abstention from voting was noted by the committee. Next word is accede. Accede means to agree to a demand, request, or treaty. So, accede means agree, consent, comply, assent, and yield. Antonym is disagree, reject, oppose, and resist. The government finally accede to the demand of the workers. Next word is agglomeration. Agglomeration means the process of collecting or gathering things into a mass or cluster. मतलब इकट्ठा करना. So agglomeration means accumulation, collection, assembly, cluster, and conglomeration. Antonym is dispersion, scattering, and separation. The city's rapid agglomeration of industries has led to rapid urbanization. Next word is aggrieved. Aggrieved means feeling resentment or injustice due to unfair treatment, distress, or upset. So, synonym is wronged, offended, injured, distressed, or upset. Antonym is content, pleased, satisfied, happy, and calm. So you can say Gandhiji was aggrieved by the unfair decision of the TT in South African train and push him out of the first class AC. Next word is ameliorate. Ameliorate means to make something better or improve it, especially a situation or condition. So synonym is improve, enhance, better, upgrade, and alleviate. Antonym is worsen, degrade, exacerbate, and deteriorate. The new policies are designed to ameliorate the living condition of the poor. Next word August. Angst. Angst means a deep, often vague feeling of anxiety, dread, or existential concern, especially about life or the future. So synonyms is angst means anxiety, worry, dread, apprehension, and unease. Antonym is calm, serenity, peace, and contentment. So कुछ वर्ड्स आप ध्यान ज़्यादा रख सकते हो कंटेंटमेंट और सेरेनिटी पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करेंगे
This is quite often asked in examination. And please, दोस्तों, please like, share, and subscribe if it is useful to you in any way. The sole purpose of this series is to give you revision opportunity rather than take making this video a lengthy one. I am trying to cover it in a shortest way so that it becomes very easy for us to recall the words. I request you to watch this video initially in 1 or 1.5x, and after 2 to 3 repetition please watch it in 2x after marking the difficult words. So let's continue. Next word is antiquated. Means old fashioned, outdated, or no longer useful, belonging to a earlier period. So antiquated means obsolete, जो पुराना है. Outdated, archaic means पुराने समय का. Old fashioned जो पुराने तरीके के का पहनावा है. Outmoded जो मॉडल आउट हो चुका है, उसको आप पहन रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट, सो अंटोनिम इज मॉडर्न, करंट, अप टू डेट, कंटेम्पररी एंड एडवांस. कंटेम्पररी मीन्स समकालीन, एडवांस समय से आगे, अप टू डेट या समय के साथ. तो इससे आप ये एंटोनिम्स हैं. द फैक्ट्री स्टील यूजेस antiquated machinery that slow down production. Next word, askance. Askance means with an attitude or look of suspicion, distrust, or disapproval. So askance means suspiciously, skeptically, doubtfully, disapprovingly, and sideways. Antonym is approvingly, trustfully, openly, directly. The teacher looked askance at the student who arrived late to the class. Next word is averted. Averted means to run, to turn away one side or thought, or to prevent something bad from happening. So averted means avoided, prevented, warded off, diverted and evaded. Antonym means पहले हम क्या कर रहे हैं, टर्न अवे, दूर हो रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं. यहाँ पे क्या करेंगे, विल अलाउ, कॉज, फेस्ड एंड इनकरेज्ड. शी क्विकली अवर्टेड हर आइज व्हेन शी सो द एक्सीडेंट. सो डू नॉट डू दिस. उसने दुर्घटना देखी और उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली. ठीक है. द प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ द फायर फाइटर्स अवर्टेड अ मेजर डिजास्टर. ये सेंटेंस काफी इंस्पायरिंग है. Next word is armamentaria. Armamentaria means the complete collection of equipment, tool, and resources used for a specific purpose, especially in medicine or military context. So, next, armamentaria means apparatus, equipment, tools, instrument, and resources. Antonym is inadequacy, scarcity, insufficient. The hospital's armamentaria included the state-of-the-art diagnostic machines and surgical tools. Next word is banal. Banal means so lacking in originality as to be obvious and boring. कुछ इतना ओरिजिनल नहीं लग रहा है. ठीक है. So synonym is commonplace, trite, cliched, hackneyed, and overused. थोड़ा पुराना. So antonym is original, fresh, novel, and unique, and inventive. The movie's plot was so banal that the audience lost interest halfway through. Next word is beacon. Beacon means a light or signal that guides, warns, and provides hope and inspiration.
So synonym is beacon means signal, guide, lighthouse, flare, and inspiration. Antonym is obsc- obscurity, darkness, and shadow. The lighthouse served as a beacon for the ship navigating through the storm. Next word is bickering. Bickering means pretty trivial arguing or quarreling, often over the significant matters. So, bickering means squabbling, quarreling, arguing, disputing, and wrangling. एक तरह से लड़ाई झगड़ा करना. Antonym is agreement, harmony, understand, and peace. भाई बहनों के बीच में लगातार झगड़े ने उनके माता पिता को परेशान कर दिया, होता है जनरली. Bigotry. Bigotry means intolerance towards those who hold different opinions or belongs to a different group, especially based on religion, race, or politics. So, bigotry means prejudice, intolerance, biases, discrimination, narrow-mindedness. सो नाउ डेज आप देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट है, दोनों साइड में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी. नो बडी वॉन्ट्स टू टॉलरेट एनी वन. किसी को सीजेपी का एक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को गवर्नमेंट का अच्छा नहीं लग रहा. पर यहाँ पे बेस्ट केस सिनारियो क्या है? दोनों चीजें होनी चाहिए. इन डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी अ, ये आंदोलन वगैरह जो चलते रहने चाहिए. जिस जो इस देश की न्यू है, सत्याग्रह, ट्रूथफुलनेस के लिए फाइट करना. अभी न्यूज में चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे, वो खुद नीट के लीकेज के पेपर के मतलब रूप में एक तरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इन्होंने भी पिटाई खाई थी. तो मतलब उनके आज एमपी एमएलए जो भी हैं इस टाइम पे वो मिनिस्टर हैं, होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा. चीजें वही हैं जो आज से कई साल पहले थी, आज से करीबन 30 साल पहले थी. तो इसका कोई फायदा नहीं है. जिस बंदे ने स्ट्रगल किया, उन्होंने खुद स्ट्रगल किया, अगर सच है ये बात, तो वही सिचुएशन उनके सामने है और वही ट्रीटमेंट अभी भी वही हो रहा है. थिंग्स आर नॉट चेंज्ड येट. चलो छोड़िए, लेट्स लीव द पॉलिटिक्स एंड लेट्स मूव ऑन टू, क्योंकि कुछ भी मैं चाहता हूँ कि दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. गवर्नमेंट को लगता है देयर देयर व्यू इज डिफरेंट, प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ. आपको जब पब्लिक को जवाब देना है, यहाँ पे कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर अगर इसमें भी आपको लग रहा है, देन आई एम सॉरी. डेमोक्रेसी को थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा कि दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री. So let's move on to bleak. Bleak is lacking hope, encouragement, or warmth, cold, barren, or desolate. So bleak means desolate, grim, barren, and hopeless and gloomy. ठीक है, एक तरीके से हतोत्साहित लोग, एकदम बैरन जगह, जो बंजर जमीन हो जाना. ठीक है. सो एंटोनिम्स क्या होगा इसका? cheerful, bright, encouraging, hopeful, and pleasant. The future seems bleak for a small businesses after the economic slowdown. इकोनॉमिक स्लोडाउन में क्या होता है? छोटे बिजनेसों का भविष्य काफी अंधेरे में चला जाता है, खतरे में चला जाता है, निराशाजनक स्थिति में चला जाता है. सो नेक्स्ट वर्ड इज bleeds. Bleeds means a sudden, instance, energetic efforts, attract, or activity, often involving a lot of coordination and focus. So, bleeds means assault, attack, onslaught, and campaign and offensive. Antonym is retreat, defense, inactivity, and hesitation. The company launch a marketing bleeds to promote its new product. Bolster. Bolster means to support, strengthen, or reinforce something, especially an idea, argument, or situation. So, bolster means support, strengthen, boost, fortify, and reinforce. Antonym is weaken, undermine, diminish, and discourage. The new evidence bolsters the defense cases in court.
Next word is brazen. Brazen means bold and shameless, often in a way that is disrespectful or audacious. इतना ज्यादा और बेशर्मी जनक, ऑफ्टन उस तरीके से जिसमें किसी को हम रिस्पेक्टफुली नहीं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती हो रही है एक तरीके से. सो ब्रेजन मीन्स shameless, bold, audacious, and insolent and brazen. So antonym is timid, shy, humble, respectful, and modest. His brazen refusal to apologize for his mistake angered everyone. तो माफी मांगने में, इंडियन कल्चर में माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है. अगर बड़ों से भी गलती हुई है तो छोटे क्या करते हैं, पहले माफी मांग लेते हैं. हालांकि इंडियन कल्चर में लोग चाहे बड़े हों छोटे हों, गलत हुआ है तो माफी मांगने में कभी परहेज नहीं करते थे. पर अभी ये हो रहा है, पीपल आर कि लोग बात ही नहीं करना चाहते. सो लेट्स मूव टू अनदर वर्ड्स. bugle. Bugle means a brass wind instrument similar to a trumpet, used primarily for military signals and calls. आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई राष्ट्रपति वगैरह आते हैं तब भी एक बिगल बिगल की साउंड बजाई जाती है. कई हमने हिस्टोरिकल मूवीज में भी देखा है कि हाथी के आगे दो लोग खड़े रहेंगे, फिर युद्ध स्टार्ट होगा या स्वयंवर की कार्यवाही शुरू की जाएगी, तो वहां जो बचता है उसे बोलते हैं, कई कई जगह लोग उसे भोंपू भी बोलते हैं. आप क्या बोलते हैं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो bugle मीन्स हॉर्न, ट्रम्पेट, कॉर्नेट, सिग्नल इंस्ट्रूमेंट. एंटोनिम, तो ये तो एक नाउन है, इसका तो एंटोनिम कहाँ से निकालोगे आप. सो द साउंड ऑफ bugle signals the start of the ceremony. Bulwark. Bulwark means a strong defense or protection against danger or attack, a protective structure or force. तो bulwark means defense, safeguard, shield, barrier, and fortification. Antonym is vulnerability, weakness, exposure. The law acts as a bulwark against the injustice in society. Next word is bundus. Bundus means embankments, dams, or raised structure, typically made of earth or other material. तो बंड्स मीन्स एक तरीके से डैम की बात हो रही है, कोई भी रेस्ट स्ट्रक्चर है जो किसी चीज से आपको फ्लड वगैरह से प्रोटेक्ट करता है. सो सिनोनिम्स विल बी embankment, levees, dams, barriers, and dikes. And antonym is depressions, lowlands, and gaps. The farmers builds burns around the fields to protect the crop from flooding. Bustling. Bustling means full of energetic and noisy activity, lively and crowded. So bustling means lively, busy, energetic, thriving, active. Antonym is quiet, calm, peaceful, and still. The bustling city streets were filled with people rushing to work. So next word is centenary. Centenary means the 100th anniversary of event or the period of 100 years. 100 साल का समय. Synonym is centennial, 100th anniversary or century. So इसका एंटोनिम्स, डायरेक्ट एंटोनिम्स नहीं है कोई भी, क्योंकि 100 साल का, फिर ये तो नहीं बोलो 200 साल उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है, कि 50 साल उसका एंटोनिम हो गया. अब जैसे कोई नाम है ब्यूगल है, तो अब उस नाम का आप ब्यूगल का एंटोनिम क्या निकालोगे, ठीक है. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड. Cesspool. Cesspool mean a covered hall or container for waste, especially human waste, a situation or place regarded as morally corrupt or dirty. तो दोनों सेंस में आप उसे यूज कर सकते हो. सो सिनोनिम्स विल बी
Cesspool means shiver, drain, pit, latrine or dump. Antonym is clean place and sanctuary heaven. तो जनरली हम सोचते हैं ना ये फला ये वाली सेंचुरी है, ये कान्हा सेंचुरी है या नेशनल पार्क है। सो सेंचुरी का मतलब वो जगह जो अच्छे से क्लीन है, सही से जिसे डेकोरेट किया है, सजाया गया है, मतलब नीट एंड क्लीन जगह। द ओल्ड हाउस had a cesspool in the backyard that was never cleaned. नेक्स्ट वर्ड इज चार्टर। चार्टर आपने कई बार सुना होगा। तो ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द right, privileges and responsibility granted to the individual or group, such as the founding document of the corporation, city or an organization. It is also refers to official document that grants the creation of companies or institution. तो उस सेंस में भी हो गया वो डॉक्यूमेंट जिसमें लोगों के राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या है, प्रिविलेज क्या है, मतलब उन्हें क्या चीज़ दी जाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें मेंशन हो। और एक कोई भी यूज़ कर सकता है, कॉर्पोरेट, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन। जनरली आप अगर देखेंगे तो चार्टर्ड एक्ट 1950 ऐसे करके 15 ऐसे काफ़ी अंग्रेजों ने लाए थे। तो इनिशियली उन्होंने चार्टर से आया था, जो अपने कानून लाए थे उन्हें फलाना चार्टर्ड एक्ट 1962 वगैरह वगैरह करके ऐसे काफ़ी थे। 1962 नहीं होगा क्योंकि उस टाइम तो हम आज़ाद हो गए, तो उससे पहले 1862 या जो भी हो, ऐसे चार्टर्ड एक्ट 3-4 उन्होंने लाए थे, अगर आप पॉलिटी को गो थ्रू करते हो तो। सो चार्टर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड एंड लाइसेंस। सो universities received its charter from the governments to operate as a accredited institution. Next word is churn. Churn means a container used for making butter by aggregating cream or milk, or a process agitation. Also refers to the rapid turnover or change, particularly in business or customer basis. So churn means butter churn, agitator, turmoil, upheaval, and turnover. Antonym is stability, consistency, calm, and stagnation. So the farmers use a churn to make fresh butters every morning. तो जिसमें हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा दही को हम चर्निंग बोलते हैं ना, चर्निंग, गोल गोल घुमाना, बार बार घुमाते रहना, उसे बोलते हैं चर्निंग करना। सो नेक्स्ट वर्ड इज cobble. Cobble means to put together or assemble in a rough or makeshift manner. ठीक है, तो जिसे बोलना एक तरीके से जोड़ना, cobble means. So cobble means assemble, construct, piece together, combine and patch up. break up उसका उल्टा patch up. So same way antonym is, कॉबल का एंटोनिम होगा डिसमेंटल करना, अलग करना, ब्रेक करना, सेपरेट करना, डिसेंबल करना और डिवाइड करना और ब्रेकअप करना. ब्रेक ऑलरेडी देयर. So he cobbled together a quick solution for the problem. Next word is colloquially. So in a conversation or information manner after used in everyday speeches. So colloquially means informally, casually, conversationally, familiarly. Antonym is formally and ceremoniously, officially एक तरीके से. Dude is colloquially used to address a close friends. Next word is complacent. Please bear with me. We will cover few more vocab here. So next word is complacence. Complacence means a feeling of self-satisfaction, often with the unaware or negative result. So complacence means contentment, complacency, self-approval. Antonym is dissatisfaction, discontent, unrest, unease. His
complacent about the situation lead to his downfall. Compulsion means a strong, irresistible argue to do something, often against one's will. So, compulsion means urge, pressure, force, coercion, and drive. Antonym is free will, voluntary action, choice, and freedom. He felt a compulsion to finish the project even though it was late. Next word is concede. Concede means to admit, often reluctantly, that something is true, that one has been defeated. किसी चीज को स्वीकार करना. So concede means admit, acknowledge, surrender, yield, given. Antonym is deny, reject, dispute, resist, and oppose. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्लोमेरेट. काफी यूज किया हुआ वर्ड है. कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स टू कलेक्ट और कंबाइन इनटू अ हॉल, often in a diverse or disorganized way. So conglomerate means combine, merge, unite, consolidate, assemble. एक बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसे भी आप conglomerate बोल सकते हो. Antonym is separate, divided, disband, and scatter. Over the year, the company conglomerated several small firms. उनको इकट्ठा कर लिया. हम सी से देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें कवर हैं. सो प्लीज़ like, share, and subscribe, and please write down in the comment section whether it is useful to you or not. We will be covering these vocab in the next part. Okay, see you. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.